lecture. Let's start standard costing. But before going to start standard costing, just I want to know, all of you aware about the term standard? आप सबको स्टैंडर्ड वर्ड के बारे में मालूम है? सुना है? What is standard? What is standard? सुना है? Are you aware the term standard? Yes. Can you tell me what is the meaning of standard? मुझे बताओगे स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? आप हमेशा ये टर्म यूज करते हो स्टैंडर्ड का, बट कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड? What is the meaning of standard? Come on. Come on. I am expecting answer. High quality. Yes. Yes, Saurabh. Is anybody else? Is anybody else? Is anybody else? Saurabh has given answer high quality. What about others? Come on. Come on, tell me fast. What about others? I am expecting answer from everyone. Why not giving answer? Tell me, all of you aware, na? Okay, I know that you're not aware. Just you know standard, but you can't say what is standard. Standard means level of activity. It may be high level, it may be low level. Okay? Like that, I'm giving example. Listen, all of you are in TY. All of you are in TY, but TY से पहले SY में थे, SY से पहले FY में थे. So from FY to SY और SY to TY जाने के लिए आपको एक स्टैंडर्ड मार्क्स की जरूरत हुई होगी 40%. दैट इज पासिंग स्टैंडर्ड. किसी को ए ग्रेड मिला होगा, उसका अलग मार्क्स होता है. किसी को A+ मिला होगा, उसका ग्रेड अलग होता है, उसका स्टैंडर्ड अलग होता है. किसी को O ग्रेड मिला बोल सकते हैं, उसका स्टैंडर्ड अलग होता है. सो स्टैंडर्ड मीन्स लेवल ऑफ क्वालिटी. अंडरस्टूड? Understood? Yes. Yes. Now, let's see. First, before going to discuss the standard costing, it is necessary for us to know what is standard. Clear? What is standard? Then we can understood properly the standard costing. The standard costing. Right? Right? So, let's see standard. Let's see standard. So, standard क्या है? Standard means predetermined. अगर मैं business की बात करूं, तो standard means predetermined of amount for what should happen. Clear? पहले से फिक्स किया हुआ अमाउंट. किसके लिए? जो भी हम लोग बना रहे हैं, जो भी हम लोग गुड्स बना रहे हैं, उसके लिए पहले से फिक्स किया हुआ अमाउंट क्या होना चाहिए? इट में भी क्वांटिटी स्टैंडर्ड. सबसे पहला क्वांटिटी स्टैंडर्ड. ओके, क्वांटिटी स्टैंडर्ड की बात करूं तो द क्वांटिटी ऑफ द रिसोर्सेज दैट शुड बी कंज्यूम्ड. क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज दैट शुड बी कंज्यूम्ड. क्लियर? कितना रिसोर्सेज जाएगा, कितनी क्वांटिटी जाएगी गुड्स को बनाने के लिए. फिर सिर्फ क्वांटिटी नहीं, उसका कॉस्ट कितना जाएगा, वो गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए कॉस्ट कितना जाएगा. कॉस्ट मीन्स
per unit of cost, that quantity which we are going to use. It means quantity standard, and second one is cost standard. That is standard. Now, standard cost. We know what is standard. Now we are going to discuss standard cost. अभी जो भी क्वांटिटी या जो भी रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं उसका कॉस्ट वो कहलाता है स्टैंडर्ड कॉस्ट. See that standard cost is predetermined cost which is calculated from management in standards of efficient operation and the relevant necessary expenditure. Yes. स्टैंडर्ड कॉस्ट की बात कर रहा हूं तो स्टैंडर्ड कॉस्ट में क्या होता है? प्री डिटरमाइंड कॉस्ट होता है, पहले से फिक्स किया हुआ कॉस्ट. कौन कैलकुलेट करता है? मैनेजमेंट विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट. कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ इफिशिएंसी ऑफ बिजनेस ऑपरेशन एंड रेलेवेंट नेसेसरी एक्सपेंडिचर. क्या क्या एक्सपेंडिचर जा सकते हैं नेसेसरी, वो एक्सपेंडिचर को ऐड करके टोटल कॉस्ट कितना जाएगा. लाइक दैट इफ आई एम टेलिंग यू एग्जाम्पल, मैं गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा हूं. सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, अगर एक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं तो एक प्रोडक्ट के कॉस्ट में क्या क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ मटेरियल का कॉस्ट आएगा. अभी मटेरियल की कॉस्ट की बात करूं तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि मटेरियल के कॉस्ट में मेरा रॉ मटेरियल कितना जाएगा. सपोज 3 kg मटेरियल जाता है, उसका प्राइस रहता है 2 रुपीज पर kg. सो टोटल कॉस्ट मेरा कितना जाएगा? 6 रुपीज मटेरियल का. सिर्फ मटेरियल से अपना गुड्स नहीं बनेगा, उसके साथ अपने को क्या जाएगा? लेबर भी चाहिए. लेबर अगर गुड्स बना रहा है तो उसको बनाने के लिए सपोज कितना जाता है? 4 आवर्स जाता है. और पर आवर का कॉस्ट कितना है? ₹3. पर आवर का कॉस्ट कितना है? ₹3. सो लेबर का कॉस्ट कितना जाएगा? 12 रुपीज. इसके साथ में और भी एक्सपेंसेस इनकर्ड करना पड़ेगा. सपोज मान लेते हैं उसका कॉस्ट जा रहा है 7 रुपीज. सो अपना टोटल कॉस्ट कितना जाएगा? टोटल कॉस्ट कितना जाएगा? 25 रुपीज. सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये 25 रुपीज क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्ट है प्रोडक्ट का. इसमें क्या क्या इंक्लूड है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस. राइट. ये कैसे कैलकुलेट हुआ? विद द हेल्प ऑफ इफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन. मैक्सिमम एफिशिएंसी में हम कितना खर्चा करेंगे गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए. क्लियर? किसी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए टोटल कॉस्ट क्या जाएगा, सारी चीजों को स्टडी करके हम लोगों ने फाइंड आउट किया है. दैट इज टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट बोले तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट. अंडरस्टूड एवरीवन? अंडरस्टूड एवरीवन? टेल मी, अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, that's good. That's good. Now see that another definition. See that another definition.
अगर मैं दूसरा डेफिनेशन की बात कर रहा हूं तो द डेफिनेशन गिवन बाय ICWA, according to ICWA, what is standard cost? Predetermined cost. देखो देखो देखो, same things. It is a predetermined cost based on technical estimate. कौन से बेसिस पे? टेक्निकल मीन्स ये जो कॉस्ट फाइंड आउट किया था मैंने 25 रुपीज, इट शुड बी टेक्निकली कैलकुलेटेड, राइट, फॉर मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स फॉर अ सेलेक्टेड पीरियड. यस, ये स्पेसिफिक पीरियड के लिए रहता है. एंड प्रिस्क्राइब्ड सेट ऑफ वर्किंग कंडीशन. यस, एक स्पेसिफिक वर्किंग कंडीशन के लिए सुटेबल होता है. सपोज ये जो मैंने कैलकुलेशन किया 25 रुपीज, इट में भी अगर ये मुंबई की जगह पे गुजरात में प्रोडक्शन होगा तो शायद लेबर का कॉस्ट कम रहेगा, शायद मटेरियल का कॉस्ट कम रहेगा, क्योंकि वहां पे रेट ऑफ टैक्स कम रहेगा, लेबर का रेट वहां पे कम रहेगा, राइट? क्लियर? So it may be different from working condition. It may be just because of different in time. So the standard cost is predetermined cost, which is calculated on technical basis, technical estimation, and it should be for a specific period and for a prescribed working condition. Now we understood what is standard cost. Now we are going to discuss what is standard costing. अभी हम लोगों ने स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है वो देखा, स्टैंडर्ड क्या था वो देखा. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है? क्लियर? नाउ कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अ टेक्निक. ये क्या है? टेक्निक है. क्लियर? और ये टेक्निक कौन यूज करता है? मैनेजमेंट. व्हाई? टू कंट्रोल द कॉस्ट, टू मिनिमाइज द कॉस्ट. क्लियर? How standard costing control or minimize the cost? How standard costing control or minimize the cost? First, in standard costing, the management has to set standard cost of a particular product, then compare the standard cost with actual cost, and then find out the difference between standard and actual cost and analyze that. Why there is a difference between standard and actual. This is the total technique of standard costing. So we can say that standard costing is a technique which is used by management to control the cost. In that, first the management has to set standard for a particular product, then find out the actual cost and compare the actual cost with standard cost, and then find out the difference between standard and actual cost and analyze that difference. Clear? Clear everyone? Clear everyone? Tell me fast. Yes, better look. Yes, that's good. That's good. See that definition given by what is standard costing? What is standard costing? What is standard costing? The standard costing is defined as, क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? Standard costing, preparation of standard cost and applying them to measure the variations of actual cost. मतलब सबसे पहला preparation of standard cost and then applying them to measure the variations. कितना changes है standard और actual में वो find out करना, and analyze the causes of variation. फिर ये find out करना कि difference क्या है, कितना difference है, analyze करना कि दोनों में कितना difference है. Clear? और क्यों difference है, causes. Why?
to view or with a view to maintain maximum efficiency in production, ताकि क्या हो सके, हमारी प्रोडक्शन में मैक्सिमम इफिशिएंसी हो सके. राइट? Understood everyone? What is standard costing? Tell me, understood everyone? What is standard costing? समझा सबको? समझा सबको? What is standard costing? Yes. Now, if I'm talking about this definition, what are the stages or what are the steps used by the business organization in standard costing? Standard costing में क्या क्या activity होती है? मैंने सबसे पहले बताया. The management has first set standard cost. सबसे पहले वो standard cost set करता है total product का. Then compare करता है किसको? Standard cost को. किसके साथ? Actual cost के साथ. और third one, analyze of variances. If there is any change, difference or variance between standard cost and actual cost, what are the reasons, what are the causes, why there is a difference between standard cost and actual cost. Actual cost और standard cost में difference कहाँ पे आया और क्यों आया, उसका reason क्या है, ये find out करना ही क्या है, standard costing. Clear? Now, अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हाउ टू सेट स्टैंडर्ड. सब लोग जहां पे भी देखा हम लोगों ने, हम लोगों को ये समझा कि पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट होगा, फिर स्टैंडर्ड कॉस्ट को एक्चुअल कॉस्ट के साथ कंपेयर करेंगे और फिर रीजन डिफरेंस निकालेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि क्यों ये डिफरेंस आया. बट हाउ टू सेट स्टैंडर्ड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. राइट ना? द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हाउ टू सेट स्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड कैसा सेट करने का, दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन. This is the biggest question, how to set standard. So let's discuss how to set standard. लेकिन उसके पहले advantages. अभी advantages क्या है standard costing के? What are the benefits? Number one, the standard costing provides context for evaluating actual amounts. Yes. The standard costing helps to give detailed information for comparison purpose. If I want to compare our actual performance, if I want to judge our actual performance, whether we have proper efficiency or not, whether we are in a right track or not, whether we are able to control the cost, how we can check? How we can check? Without setting standard, we cannot evaluate. हम लोग कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्शन का 500 रुपीज जा रहा है कॉस्ट, टोटल कॉस्ट 600 जा रहा है, 800 जा रहा है, 1000 जा रहा है, 100 जा रहा है. सो हमें क्या मालूम कि जो भी कॉस्ट आ रहा है 100, 1000, 500, 700, ये हमारा कॉस्ट अच्छा कॉस्ट है, सबसे लोएस्ट कॉस्ट है. हाउ वी कैन? जब तक हम लोग टारगेट सेट नहीं होगा कि स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए, तब तक हम लोग जज नहीं कर सकते. जो कॉस्ट आएगा वही बोले कि हाँ बहुत अच्छा कॉस्ट है, कमी है कॉस्ट. सो कंपैरिजन करने के लिए कुछ तो चाहिए, जज करने के लिए कुछ तो चाहिए कि ये बेसिस है भाई, ये कॉस्ट आएगा तो अच्छा है. सो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग प्रोवाइड्स द कंटेक्स्ट फॉर इवैल्यूएशन पर्पस. ये अपने को बेस देता है कैलकुलेशन के लिए, कंपैरिजन के लिए. एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज it is fixed. The cost, standard cost do not fluctuate.
It never change. It will remain unchanged. Clear? And third advantage is simplified accounting. Yes. The calculation of standard costing or use of standard costing method is very simple. There is no complication. So any management can apply standard costing because of simplicity. And you know that if it is very simple, then we do not require so many person. And if we do not require person for calculating, hmm, for calculating standard costing, then it is very, we can say that less expensive or less costly technique. अपने को इसमें कॉस्ट भी ज्यादा इनकर नहीं करना पड़ेगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लिए. Understood? All these are the advantages. Understood everyone? Understood everyone? Yes, that's good. That's good. Good. Now, already I discussed the setting of standard. The setting of standard is very difficult task. Why difficult? Because if we are not able to set standard, then our technique of standard costing will be useless. अगर हम लोगों ने स्टैंडर्ड सेट नहीं किया तो जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टेक्निक यूज कर रहे हैं वो क्या होगा, यूजलेस होगा, किसी काम में नहीं आएगा. और जब स्टैंडर्ड सेट करते हैं तो स्टैंडर्ड सेट करते समय क्या क्या ध्यान में रखना पड़ेगा, क्या चीजें. सपोज if I am setting standard cost, so standard cost includes three things: cost of material, cost of labor, and cost of overheads, right? So if I am talking about only material, so if I am fixing the standard material cost, so material cost के बारे में सबसे पहले हम लोग material में quantity, कितनी quantity जाएगी, right? This is the basic requirement. हम लोग कोई मटेरियल यूज करें तो सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि मटेरियल कितना कंज्यूम करेंगे, राइट? कौन कौन से प्रोसेस में जाएगा मटेरियल, क्लियर? मटेरियल कितना यूज करने वाले, कौन से प्रोसेस में जाएगा मटेरियल, मटेरियल के साथ कोई भी अलाउंसेस है क्या, डिस्काउंट है क्या, कोई भी नॉर्मल और एबनॉर्मल इनएफिशिएंसी है क्या, क्या हिस्टोरिकल कॉस्ट वहां पे इफेक्ट करेगा क्या, पहले जो कॉस्ट था किसी भी प्रोडक्ट का वो उसका यहाँ पे कोई लिंक है क्या, रिलेशन है क्या, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट रखती है जब हम लोग क्वांटिटी के बारे में सोचते हैं. फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं मटेरियल से रिलेटेड क्वांटिटी के बारे में, राइट? क्या क्वांटिटी कितना जाएगा और क्वांटिटी के साथ उसका कॉस्ट कितना होगा, कॉस्ट बोले तो पर यूनिट का कॉस्ट कितना होगा. जो भी हम लोग रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं मटेरियल, उसका पर यूनिट कॉस्ट क्या होगा. अब पर यूनिट कॉस्ट डिसाइड करते समय क्या क्या देखना होगा, उसकी क्वालिटी क्या होगी, नॉर्मल क्वालिटी के साथ क्वांटिटी क्या चाहिए, क्या रेगुलरली सप्लाई हो सकता है गुड्स, क्या डिफिकल्टी आ सकती है सप्लाई में, इज देयर एनी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, उसका कोई ट्रांसपोर्टेशन का अलग सिस्टम है क्या, इज देयर एनी गाइडलाइंस फॉर शिपिंग ऑल दीज थिंग्स, is there any other charges like that, GST, BST, all these things, you can say that. So all these things we have to find out, first quantity, then we have to study about cost.
उसके साथ में और क्या क्या चीजें हैं, अदर इश्यूज, इज देयर एनी चांसेस ऑफ नॉर्मल एक्सपेंडिचर और नॉर्मल कॉस्ट, और इज देयर एनी difficulty while production activity, whether we can practically produce or not, whether whatever we are going to produce, it may be perfect according to requirement. Who affects standard? Who can take better decision about standard? Who is more familiar with the product? Who is more familiar with the raw material? Who is more familiar with the market price of the raw material? So who can take better decision about the cost? Who can take better decision about the requirement of raw material? That will give you proper guidance. That will help. That help us to set the standard. Understood, everyone? That is any doubt? Is any doubt to anyone in setting of standard? Is any doubt to anyone? So no doubt. Yes. Now listen. We know how to set the standard. अब स्टैंडर्ड सेट करने के बाद क्या करना पड़ेगा? कंपैरिजन. स्टैंडर्ड सेट करने के बाद क्या करना पड़ेगा अपने को? कंपैरिजन. किसका? स्टैंडर्ड कॉस्ट का. किसके साथ? एक्चुअल कॉस्ट के साथ. स्टैंडर्ड कॉस्ट का एक्चुअल कॉस्ट के साथ कंपैरिजन करना पड़ेगा, राइट? सो कंपैरिजन किसका होगा? कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी और कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट. कॉस्ट का कंपैरिजन किसके साथ? क्वांटिटी के साथ. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट क्वांटिटी, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट क्वांटिटी, सो क्वांटिटी में क्या हो सकता है? क्वांटिटी में क्या हो सकता है? मटेरियल की क्वांटिटी हो सकता है. अगर मटेरियल कॉस्ट के बारे में बात करो, लेबर कॉस्ट के बारे में बात करो, तो लेबर आवर्स के बारे में हो सकता है. इफिशियंसी, कितने घंटे में वो प्रोड्यूस करके दे रहा है, मतलब उसकी इफिशियंसी क्या है. मटेरियल कॉस्ट के बारे में बात करो तो मटेरियल का कॉस्ट कितना जाएगा. लेबर का बात करो तो लेबर का रेट क्या जाएगा. ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसके लिए, वेरिएंस के लिए, डिफरेंसेस के लिए. राइट? राइट एवरीवन? सो आई एम स्टॉपिंग हियर up to variance analysis. We will continue with formula and practical question in the next lecture. Right? What we discussed today? क्या क्या किया आज हम लोगों ने? क्या क्या किया आज हम लोगों ने? हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा? What is standard? Right? फिर क्या देखा हम लोगों ने? फिर क्या देखा हम लोगों ने? What is standard cost? Right? सबसे पहले देखा what is standard. Then हम लोगों ने डिस्कस किया what is standard cost with definition. Then हम लोगों ने क्या किया? What is standard costing? With the help of that, we discuss the stages of standard costing, means steps for doing standard costing or applying standard costing in business organization. Then we discuss the advantages of standard costing, and at the end we discuss how to set standard. At the end we discuss how to set standard. किसी भी प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड कैसे सेट करने का.
सबसे पहले स्टैंडर्ड सेट करने के लिए क्या सेट देखना पड़ेगा? क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, इनएफिशिएंसीज कितनी हो सकती है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कितना अफेक्ट करेगा, फिर उसका कॉस्ट क्या हो सकता है, कॉस्ट के टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, डिफरेंट टाइप की क्वालिटी है तो उसका कॉस्ट क्या है, सप्लायर्स कौन कौन से अवेलेबल है, टर्म्स रिलेटेड विद ट्रांसपोर्टेशन है क्या कुछ, या इज देयर एनी अदर फैक्टर विच अफेक्ट्स द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, which are there. All these things we will do or we will keep in mind while setting the standard. Then afterwards other issues कौन कौन से हो सकते हैं स्टैंडर्ड सेट करते समय, नॉर्मल क्या लॉस क्या हो सकता है, कितना चांसेस है, हाउ टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स, प्रैक्टिकली जो हम लोग सोच रहे हैं वो क्या प्रोडक्शन पॉसिबल हो सकता है कि नहीं, कौन स्टैंडर्ड को सेट कर सकता है प्रॉपर वे से, कौन प्रोडक्शन से ज्यादा रिलेटेड है, कौन मार्केट से ज्यादा रिलेटेड है, किसको कॉस्ट के बारे में आइडिया ज्यादा है, उनको हेल्प लेके हम लोग स्टैंडर्ड को सेट कर सकते हैं. क्लियर? सो टेल मी, इज एनी डाउट अप टू हियर? इज एनी डाउट अप टू हियर? इज एनी डाउट अप टू हियर? मारिया, मारिया, what बेटा, मारिया, what is any doubt? Maria, Maria, is any doubt to you? Okay, so no doubt to anyone? No doubt to anyone? Sure, we have few seconds more. If you want, you can ask. We have few seconds. If you want, you can ask. No doubt. That's good. So, bye bye everyone.